Assalamu alaikum. My name is Sidra and my group partner is Asim Nawaz. The topic of our review paper is analysis on the quality factors, which are McCall's and ISO 9126. I will be discussing the McCall's quality factors, and Asim will discuss the ISO 9126 quality factors. Okay, so first thing first, let's see what is quality. Quality can be defined in a different manner. The quality definition may vary from person to person, but finally there are some standards that quality can be defined. Um, it is generally focused on the excellence. For example, in the Oxford Dictionary, quality is defined as the degree of excellence, and in ISO, quality is defined as the totality of the characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Okay, so McCall's quality models. McCall quality model is the most oldest and the most applied software quality model. The McCall model are used in big projects. McCall quality characteristics are 55, which are then suppressed into 11 characteristics, which are efficiency, integrity, reliability, usability, accuracy, maintainability, testability, flexibility, reusability, transferability, portability, and interoperability. Okay. Let's see what is quality factors. There are the various attributes of software and its use and maintenance, which will be defined in the software or SRS document, and they can be classified into their context group, which is called the quality factors. Okay, McCall quality factors are the product operation factor, product revision factor, and product transition factor. Okay, so in our previous, as we see the previous 11 characteristics, now those 11 characteristics are fulfilled in these three product operation factors: product revision factor and product transition factor. Okay, so now we will see what is the product operation factor. The product operation factor is the basic operational characteristics. In the operation factors, there are correctness, reliability, integrity, usability, and efficiency. Product revision factor is the product that has the ability of change, to have an ability for a change in the system. In revision factors, there are maintainability, flexibility, and testability. Product transition factor. In the transition factor, it is the ability to work in a new environment. In the transition factor, there are portability, reusability, and interoperability. Okay. Product operation factor. Now we will discuss each of the product that we have discussed earlier in brief. In brief. Okay, so let's see what is correctness. As the term suggests, that the term correctness, or we can say accuracy, is defined by the requirement of the user that should be fulfilled, whether it is functional or non-functional, or should not be have any error, fault, or we can say bug. Okay. Second one is the reliability. The term reliability defines that it deals with the fault-free operation in our system. That how many fault-free operation are there, but system or user shouldn't know about this. They determine the maximum allowed software system failure rate and can refer to the entire system or to one or more of its separate function.
Third one is the integrity. Integrity. Yeah, integrity. The term integrity means that our system should not approve unauthorized user, and this deals with the software security that no one, or we can say any unauthorized person cannot access, and to distinguish between the majority of the personnel allowed to see the information and a limited who will be allowed and to change data and so forth. It means to check the ability of a system of the security, that how secure is our system. Okay. Fourth one is the usability. Usability requirement deal with the scope of staff resources needed to train a new employee and to operate the software system. Usability means that, in other words, we can say that usability means that our system should be user friendly or easy to use. And if the user find our system easy to use, then it is usable. Okay. Last one is the efficiency. Efficiency requirement deals with the hardware resources needed to perform all the functions of the software systems. Okay, the computer resources and the code volume that is needed for a program so that it can fulfill its function. The efficiency or the performance is the efficient use of the computer code. Okay, the second factor that we are discussing is the product review and factors, which has maintainability, flexibility, and testability. Let's see what is maintainability. Determining the effort that will be needed by user and maintenance personnel to identify the reason of software failure and to correct the failure or to verify the success of the correction. The term maintainability starts from the very moment our system comes into operation. Flexibility. Flexibility means that how much easily scalable or flexible our system is. In other words, we can say that how easily our system can be changed. Third one is the testability. The testability requirement deal with the testing of an information system as well as its operation. The term testability fulfills the requirement and see if it if it fulfill the user requirement or not, to verify the system that we have made. In testing, there are various level of testings, which are unit testing, component integration, system acceptance, alpha and beta testing. These are in their sequence and they cannot be rearranged. They are performed as they are defined. Okay. So the third one is the product transition factors, which has portability, reusability, interoperability. We will see what is portability. Portability requirement tend to the adoption of a software system to other environment consisting of different hardware or different operation. Okay. Uh, Reusability is that if we make changes in our system, it should be reusable to the new system. Interoperability. Interoperability of one system to another should be easy for product to exchange data or services with other system. It means that if two systems are connect with each other, so is it providing the required output? uh, does it provide the output that we needed? So that's all for my side, and I think Asim will sure continue next. Over to you. Assalamu alaikum. My name is Asim Nawaz, and I will discuss the ISO 9126 quality factors. So let's see first of all कि ना ISO 9126 है क्या चीज़, मतलब ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ISO 9126 क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं कि वह चीज़ मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है।
तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसके अंदर ना बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो कि हैं फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ठीक है। और ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि हम अगर फंक्शनैलिटी को देखें तो उसके आगे सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी। इसी तरह से रिलायबिलिटी के आगे सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि मैच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी। सेम इसी तरह से यूजेबिलिटी के आगे सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट सब कैरेक्टरिस्टिक्स था वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था आईएसओ का, वो था फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी बेसिकली होती क्या है, इसमें हमारे पास एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो कि बियर करता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ अ फंक्शन और उसकी जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज होती है। इसके हमारे पास जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी और सिक्योरिटी। सो जो फर्स्ट इसका सब कैरेक्टरिस्टिक्स है सूटेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, इसमें होता है कि द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सेट ऑफ फंक्शन दैट आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर की एबिलिटी हो कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा सब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। ये बहुत ही द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट है जो कि यूजर की डिमांड थी, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। इसका इंटरऑपरेबिलिटी होता है द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसका लास्ट जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिक्योरिटी। इसमें होता है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर सके, उसको कोई हार्म ना पहुंचा सके। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच द सिस्टम फेल्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम है वो किस मतलब किस हद तक जाकर फेल होता है, ठीक है। इसके यहाँ पर जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्स्ट हमारे पास है मेच्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि एबिलिटी टू हैंडल फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। इसका मतलब ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी वायरस आ जाता है, कोई भी चीज़ आ जाती है, ठीक है ना, तो हमारा सिस्टम है वो इतनी उसके अंदर काबिलियत या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको हैंडल कर सके, फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर सके फेलियर की, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। ये बेसिकली होता है द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम व्हेन द अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट अकर। इसका ये मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म करेगा जब ना कोई अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें पता ही ना हो, कोई फॉल्ट आ जाए, कोई अकर आ जाए। मतलब कि हमें कुछ ना पता हो, हमारे सिस्टम पे कोई सडनली हार्म वायरस या कोई चीज़ आ जाए, तो हम कैसे, सिस्टम हमारा इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको सही तरह से परफॉर्म हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट सब कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिकवरेबिलिटी। इसका होता है द एबिलिटी टू रिकवर व्हेन सॉफ्टवेयर फेल्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना वो इतना काबिल होना चाहिए, इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई फेलियर आ जाए तो वो सारा का सारा डाटा जो भी था उसको रिकवर कर सके, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर था आईएसओ का वो है यूजेबिलिटी। ये यूजेबिलिटी द यूजर फ्रेंडली सिस्टम इज बेसिकली यूजेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इसके जो बेसिक सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हैं लर्नेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब ये होता है एबिलिटी ऑफ यूजर टू एक्नॉलेज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है द एबिलिटी ऑफ यूजर टू एक्नॉलेज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कि यूजर को नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन का अच्छे से, और उसको पता होना चाहिए कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज लर्नेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू लर्न द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। मतलब ये है कि जो हमारा उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना इतनी एबिलिटी नहीं चाहिए कि वो ना फंक्शनैलिटी जो होती है सिस्टम की उसको अच्छी तरह से लर्न कर सके और उसके मुताबिक काम कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑपरेबिलिटी। द यूजर कैन इजीली ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हमारा वो इस तरह से बना होना चाहिए कि जो हमारा यूजर है ना वो इजीली उसको चला सके, इजीली उस पर काम कर सके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म विद द रिसोर्सेज। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अगर उसमें कोई रिसोर्सेज ऐड होगी तो उसके साथ भी वो परफॉर्म कर सके। तभी सब कैरेक्टर्स में होगा टाइम बिहेवियर और रिसोर्स बिहेवियर। टाइम बिहेवियर क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन। मतलब कि जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। द नेक्स्ट इज रिसोर्स बिहेवियर।
रिसोर्स पीरियड में क्या होता है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कि कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी उसको कोई भी सिस्टम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कि हम क्या क्या चेंजेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या क्या नई चीज़ें ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ये सब कुछ है। इसमें हमारे जो सब करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं वो है टेस्टेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, एनालाइजेबिलिटी, स्टेबिलिटी। जो फर्स्ट है हमारे पास टेस्टेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि टू इजीली टेस्टेड, मतलब ये कि हम जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करते हैं या बनाते हैं तो वो ना बहुत आसानी से टेस्ट हो जाना चाहिए, वो मतलब ये ना हो कि हम उसको टेस्ट ही ना कर पा रहे हो, उसकी मतलब उसके अंदर फेलियर या सक्सेस हमें पता ही ना कर पा रहे हो। तो ये इंश्योर हमें करना चाहिए कि हम इजीली इसको टेस्ट कर सकें। सॉरी। नेक्स्ट है चेंजेबिलिटी, मतलब कि टू इजीली मॉडिफाइड, मतलब अगर हमने उसके अंदर कोई भी चीज़ चेंजेस करनी है या कोई भी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो हम वो इजीली कर सकें, या उसके अंदर मॉडिफिकेशन हम इजीली कर सकें। तो नेक्स्ट इज एनालाइजेबिलिटी। इसमें ये होता है कि टू अलाउ डिटेक्शन ऑफ कॉज ऑफ फेलियर और फॉल्ट, मतलब कि हमें अलाउ करना चाहिए, टू अलाउ डिटेक्शन ऑफ अ कॉज, और हमें अलाउ करना चाहिए कि किस वजह से हमारे में फेलियर आ रहा है, मतलब क्या फॉल्ट था जिसकी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, हमें वो डिटेक्ट करना चाहिए उसको। तो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, टू विथस्टैंड रिस्क अकरिंग ड्यू टू मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि हम जब मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस है उसके अंदर हमारे पास रिस्क होते हैं कि कुछ भी फेलियर आ सकता है, कुछ भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो हम हमारा सिस्टम इतना होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो ना विथस्टैंड कर सके, उसको वो हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है पोर्टेबिलिटी, जो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू बी ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो ये ना हो कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे चलता हो, वो ये भी होना चाहिए कि वो एक सिस्टम पे चला तो दूसरे सिस्टम में भी चलना चाहिए, किसी और सिस्टम में भी चलना चाहिए। इसके जो हमारे पास सब करेक्टरिस्टिक्स थे वो थे इंस्टॉलेबिलिटी, कंफॉर्मेंस, रिप्लेसेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। जो फर्स्ट है इंस्टॉलेबिलिटी, इसमें क्या होता है, एफर्ट टू विच द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट, मतलब कि कितनी एफर्ट लगी है या कितना हमने उस पर टाइम लगाया है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। जैसे कि मैं अगर नई विंडोज़ करता हूँ अपने लैपटॉप पे, तो वो ओवरऑल कितना मेरी एफर्ट लगी, कितना मेरा टाइम लगा है इसको मेरे अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने में विंडोज़ को, दिया होता है इंस्टॉलेबिलिटी। परफॉर्मेंस क्या होता है, effort with which software compiles with the standard that are related to portability, मतलब कि कितनी एफर्ट लगी है जो कंपाइल होंगी विद द स्टैंडर्ड जो कि रिलेटेड है पोर्टेबिलिटी के साथ। द नेक्स्ट इज रिप्लेसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एफर्ट विद विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इसमें तो हम एफर्ट सारी एस्टिमेट करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर लगाता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। फिर द लास्ट इज अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अडाप्ट द न्यू एनवायरनमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें ये होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर इस काबिल होना चाहिए कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नया एनवायरनमेंट आ गया, तो वो उसको अडॉप्ट कर सके और अपना जो काम कर रहा है वो उसका काम सही से चलता रहे। नेक्स्ट प्लीज। तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमारा बेसिकली ये है कि जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की इज डिफाइंड बाय बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया था इन 1970 एंड 1980। और ये जो भी डेफिनेशन थी ना बहुत पुरानी हो चुकी है, और मतलब जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसको मीट नहीं कर पा रही, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं जैसे कि यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, ये इनको ज़रूरत है हमें रीडिफाइन करने के लिए, मतलब क्योंकि जो भी इनकी पहले से डिफाइंड है, जिस तरह के पहले से डिफाइन हुए हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी को मीट नहीं कर पा रहे। और जैसे कि फैक्टर्स हैं हमारे पास सूटेबिलिटी, लर्नेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये स्टिल हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये न्यू टेक्नोलॉजी को मीट करते हैं और ये स्टिल इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे the many other subcategories are engineer which show complete requirement specification for enhancing the software quality। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में, कंप्लीट में इंफॉर्मेशन देते हैं। The subfactors of the ISO show hierarchy which is easy to learn and use। The ISO के जो है सब फैक्टर्स है ना वो बहुत ज़्यादा easy to learn है और इनको हम आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। So this was all our presentation was, thank you very much।